अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मंशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मंशा's मॉम रूटीन। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड एंड अभी तक यू गाइस हैव सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माय चैनल। सो जैसा कि आपने कैप्शन में पढ़ा ही होगा, आज मैं आप लोगों से स्लीप पैटर्न्स की बात करूंगी। आई जस्ट वांट टू बी रियली क्विक इन द वीडियो एंड बिफोर आई मूव ऑन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल to please share this content with those who are new mothers or who are about to give birth, because this may help them in near future. And before I actually talk about it, I would like to start with the saying that every child, every baby is different. हर किसी का सोने का, उठने का, खाने का पैटर्न डिफरेंट होगा. Some are blessed that their baby sleeps on time, has a schedule, या बाकी सारी चीज़ें. So don't compare your baby with other babies, or this journey definitely needs a lot of patience. Motherhood itself is a very tumultuous job, and just go with the flow. All right, so let's begin. बेबी का स्लीपिंग पैटर्न जो है किसी भी बच्चे का, वो उस दिन से बन जाता है जिस दिन से वो दुनिया में आता है. यानी डे नाइट की फ़र्क करना और कितने घंटे उसने दिन में सोना है और कितनी देर तक उसने स्ट्रेच करना है अपना स्लीप, वो सारा उसने सीखना है फ्रॉम डे वन. I won't say that we all are blessed with the babies who sleep for longer hours, या जिनके जो स्लीपिंग पैटर्न्स है वो स्ट्रेच होते हैं from day one itself. Not necessarily. But yes, there are mothers, there are babies who do sleep for longer stretches, who do sleep for longer hours, or maybe they sleep for the whole day and keep their mothers up for the whole night, or at times they do sleep well for the night. So it all depends from child to child. When my son was born, I initially for first 2 months did suffer a lot with the sleep and all, but eventually, thankfully, I was blessed that I got into a routine with him, and eventually by the month he turned 3 months old. He turned 3 months old, and he had developed a sleeping pattern, and that really helped me in in giving myself that rest. That is very important, especially the sleep we need through the initial months of postpartum. So when the baby is born, जो ही एक बच्चा पैदा होता है उसने भूख की वजह से या डायपर की वजह से या डिस्कम्फर्ट की वजह से जागना ही जागना है. तो आप 1 घंटे की बात बोलें या 2 घंटे के बाद बोले, बेबी उठता है, ऑफ कोर्स उठता है. Whether you bottle feed or you direct feed the baby, eventually baby will be up. So you won't say that why is the baby up and all of that. So first 2 months or 3 months are the most difficult time of the motherhood. I know, the toddler phases even more. But for those who are just about to give birth or are moving closer to their EDDs, तो आपने ये ध्यान रखना है कि देयर इज अ पैटर्न फॉर द बेबी. ईट, बर्प, पूप एंड रिपीट. बच्चा खाएगा, बच्चे को बर्प कराना है, बच्चे का पूप होगा और बच्चा सोएगा. दैट्स इट फॉर द न्यूबॉर्न. तो न्यूबॉर्न फेज इज ओनली अप टू 8 वीक्स. आपने कोशिश करनी है कि जितनी देर भी आपका बेबी इज अप, he or she gets ample time from you. He's fed well, पूरी तरह से उसने खाया पिया है. I mean, he's full, he's contented, and then only he will fall asleep. He or she, whoever I mean, whether he's a girl or a boy. Also, you need to keep in your mind that a baby will not sleep if there is extreme noise, if there is extreme discomfort, because he's not used to it. The only tip that I would be sharing you with the newborn sleepers: swaddle wrap. Wrap your baby around, covering his arms. पूरी तरह से उसको नेक से लेकर उसकी बॉडी को रैप करें. जिस तरह से हम टावल में लपेटते हैं किसी चीज़ को, आप बेबी को पूरी तरह से उसको swaddle wrap में रखें. उसकी बाजुएं बंद रखें जब वो सो रहा है, because that is the most disturbing thing with the babies, because they tend to move their arms, they tend to move their, there is something that happens with them, that they just tend to move their arms, or they just get disturbed if their hand moves. तो आप उनकी बॉडी जो है उसको इस तरह से रैप करें. द मोमेंट न्यू बेबी इज बॉर्न, उस तरीके से उसको जब उस वाइट क्लॉथ में या एक टाल में बांध के रखा जाता है, आप अपने बेबी को उस तरह सुलाएं. बिल्कुल उसके हाथ, उसकी गर्दन से लेकर उसके पैर तक, जस्ट टाई हिम, नॉट टाई हिम, आई मीन रैप हिम इन द क्लॉथ.
whichever cloth you have, whether you have a swaddle wrap or you have a soft blanket for this kind of मौसम and all. देन दूसरी चीज़ जो आपने ख्याल रखनी है, आप अपने बेबी को पहले से एक पीसफुल एनवायरनमेंट में सोने की आदत डालें, जहाँ पे उसने कंप्लीट साइलेंस में नींद करनी है, जहाँ उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो। नंबर 3, जब आपने फीड कराया बेबी को, इफ ही इज़ और शी is under 1 month or under 2 months, maybe these things won't work except the swaddle, but swaddle is gonna work for all age groups at least till the baby turns 6 months. But once your baby crosses 2 months, you need to work on the scheduling of the sleep. तो मान लीजिए कि आपने बच्चे को 1 बजे फीड करा है, बॉटल फीड और whatever, bottle feed या जो भी उसका feed हो गया, once the child has eaten, you will make sure that the child gets some time in the environment. थकने दीजिए, baby should get time to observe his environment. Maybe he's not just, interested in the environment around. Maybe there's just too much of noise for him. Maybe it's not interesting for him to stay in that environment. But let him, because बच्चा थकेगा, बच्चा सोएगा. So अगर बस वो स्टेयर कर रहा है चीज़ों को और he's just observing things around, let him, because that would tend to make him more tired and he will fall asleep. So in this phase, right after 2 months, it's not just eat, burp, and poop. It's eat, wait, burp हो गया, burp के बाद थोड़ा रुकिए, let him or her sit and relax and enjoy in somebody's lap or just move around in the room or just play with the rattle or maybe some, those small things, because he won't understand, but at least he will observe and eventually he'll get tired and he'll fall asleep. So you need to give him that space कि वो थके, वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए, वो एक्टिविटी है जो आप उसको दे रहे हैं, just to observe, just to sit, just to maybe just in his crib, maybe just in his cot, maybe just in his the mat that you lie him on. Let your baby get tired and then he will sleep. So this really worked for me after my son turned 2 months. मैं उसको एकदम से दूध पिलाने के बाद नहीं सुलाती, मैं उसको अपनी मदर के हाथ देती या whoever was around me, I would just tell him to hold him in his lap or just make him sit or just hold him in a way that he'll just stare and he will just gaze towards the people and he'll just observe things and eventually he'll just get tired and he'll sleep. And for the night, what I realized, what worked for me after 2 months was that eventually he did wake up. So I wasn't that blessed, but yes, I was लकी इनफ दैट जल्दी सीखा. तो 2 1 डेढ़ घंटे बाद अब जाग ही जाता है बेबी, उठ ही जाता है और उसको फीड कराने के बाद बच्चा फिर दोबारा सो सकता है. लेकिन बच्चे का जो मैंने एकदम से पैटर्न सीखा वो दिन पे. तो यू नीड टू वर्क ऑन योर डे टाइम रूटीन, यू नीड टू वर्क ऑन योर डे टाइम शेड्यूलिंग, योर डे टाइम नैप्स फॉर द चाइल्ड. इवेंचुअली ही विल डेफिनेटली फॉलो asleep for the night. Though there are mothers whose baby suffer from colic, whose baby suffer from some other kind of problem or maybe sleep pattern. So this is really really tough time. I cannot promise you that this will work for you. But if your child has colic or is colicky, just try lying down the baby upside down. आप इस तरीके से किसी भी तकिए पे या किसी भी छोटे से कुशन पे बेबी को उल्टा उल्टा बिठाए towards the पेट साइड जो उसका टमी होगा उस पे और हल्के हल्के से उसको पैट करें. तो दिस विल डेफिनेटली गिव हिम अ रिलीफ. और दूसरा तरीका जो है आप अपने बच्चे को लेफ्ट हाथ पे भी रख सकते हैं एंड जस्ट लेट हिज बॉडी रेस्ट ऑन योर हैंड एंड होल्ड हिम अपसाइड डाउन. So this was one more tip. Other than that, what will help you in the sleeping pattern is that throughout the day, decide how many naps your baby's gonna have. Now this will be after his 6 months, because once you start solids, once you start weaning, so आपका baby will be dependent upon naps. He won't sleep for longer stretches. He will have 14 hours sleep, 15 hours sleep, up to 18 hours sleep. But now that he has crossed early 3 months of the newborn phase, or he's still a baby, but he's an infant. So for me, the best thing was that if your child is an early riser, यानी वो जल्दी जागते हैं सुबह, तो उनको ब्रेकफास्ट के बाद दोबारा सुलाएं. यानी अगर बच्चा 7 से 8 बजे के बीच में जाग रहा है, तो बाय 10 और 10:30 योर चाइल्ड विल गेट टाइम. 2 और 3 आवर्स का गैप आ गया बीच में. आप उस दौरान बच्चे को आपने ब्रेकफास्ट कराया मे बी, एंड दिस इज स्पेसिफिकली आफ्टर 6 मंथ्स, ओके, नॉट बिफोर दैट. तो मे बी मैंने अपने बच्चे को ओट्स खिला ली और मे बी आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई यूज्ड टू गिव फॉर द ब्रेकफास्ट व्हेन ही वाज 6 मंथ्स. जो भी खिलाया, बट 10 10:30 to 11 आई मेड श्योर दैट ही
दैट इज फर्स्ट नैप ऑफ द डे। ओके, वो हो गया। उसके बाद अराउंड 11:30 to 12 बेबी इज अप, बट आई वोंट फीड द बेबी राइट अवे, यानी वो उठा, उठते ही उसको मैंने खाना खिलाया, नो। गिव हिम टाइम, लेट हिम सेटल, रिलैक्स। 15-20 मिनट्स आपका आराम से निकल जाता है। आप एकदम से यू कम विद द सिलिकॉन थिंग एंड स्टार्ट फीडिंग, नो, जस्ट गिव हिम टाइम, गिव हिम स्पेस, लेट हिम कम बैक टू हिज मूड, बिकॉज बच्चे उठते ही बहुत ज़्यादा क्रैंकी होते हैं, बहुत इरिटेटेड होते हैं। तो 1-1:30 बजे के आसपास आई स्टार्ट गिविंग सॉलिड, मे बी मैश्ड राइस और मे बी मैश्ड एग्स। वो खाने के बाद I will let my child play, watch TV or whatever is around. Maybe he's just fiddling with the things because he's still a 6-month-old baby who's I'm trying to develop a sleep pattern for him. And उसके बाद बच्चा 2-2:30 बजे, यानी हर नैप के साथ आपका 3 to 4 hours या 2:30 to 3 hours का बीच में गैप होगा। यानी आपके बेबी की फर्स्ट नैप से दूसरे नैप के बीच में 3 घंटे का मिनिमम फर्क होगा। यानी आफ्टर हिज लंच he would sleep around 2 or maybe 3. So गया, baby is tired, baby will ask you for maybe feed, or maybe he will ask you to hold you in, hold him in your lap, baby सो गया, बज गए 5 या बज गए 4। उसके साथ ही आपने देखना है कि आपका इमीडिएट स्नैक क्या हो, whatever you have. So you will just let the baby wake up peacefully, happily, cheerfully, हंसते हंसते आपने बच्चे को स्नैक दे दिया ना। वहाँ पे मेरा जो एक ट्रिक था, मैं बेबी को थर्ड नैप ऑफ द डे भी करा रही थी। So once Saad turned 6 months, from 6 months till the time he was 11 months old almost, yani maybe till he turned 1 year, he was on 3 naps a day, yani 11 बाय 10-10:30 वाली नींद तो अलग है, बट बाय 8 p.m. तक उसके 3 नैप्स कंप्लीट हो गए होते थे दिन, बिकॉज ही यूज टू वेक अप रियली अर्ली, देन मॉर्निंग नैप, द फोरनून नैप एंड द आफ्टरनून। तो अगर स्नैक के बाद मुझे लगता है बेबी स्टिल क्रैंकी और बेबी स्टिल वांट्स टू जस्ट टेक अ नैप, तो 7 साढ़े 7, बिकॉज दिन बड़ा था, आई हैड एम्पल टाइम फॉर द बेबी टू स्लीप, तो मैंने उसको तीसरी नैप की आदत भी कराई थी, एंड ही वुड बी अप बाय 7:30 to 8, एट टाइम्स 8:50। एंड उसके बाद भी मेरे पास एम्पल टाइम था कि मैं उसको डिनर तक वेट कराती, और ही वुड प्ले विद हिज फादर, ही वुड प्ले विद द टॉयज, और जस्ट गेट इन्वॉल्व इन द सराउंडिंग्स, और जस्ट observe natural things around him. And by the time we would have elders would have the dinner, he would also attend that thing around him, that noise, that participation, or eventually by the time we will be in bed, he will also fall asleep. तो मैंने इस तरीके से उसकी ये की थी कि जब वो उठे, मैं उसको ठीक ठाक खिला पिला के उसको थकने दूँ, उसको वो एक्टिविटी, चाहे उसकी आंखों से एक्टिविटी हो रही, चाहे वो ऑब्जर्व ही कर रहा है, चाहे वो बस हाथों में उन खिलौनों को बजा ही रहा है, उस तरीके से मैंने उसको इन्वॉल्व कराया, जिस तरह से मैंने उसको टाइम दिया कि यू जस्ट ऑब्जर्व थिंग्स। अब आप थक जाओ, इमीडिएटली उसको गोद में उठा के उसको बड़ा पैट 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 करने से नींद नहीं आए। So you just need to focus on scheduling of your sleep, baby sleep. But first 2 months, yes, of course, they will be difficult, but eventually you'll have a track. But when once you have the track, don't lose it. So at moment, my son is 18 months old. He's still on 2 naps a day. Third wali khatam ho gayi hai. First half में if he wakes up by 7 to 7:30, I'll make sure that 10:30 he's 10:30 a.m. he's back in the bed, or at least 11, यानी उसका breakfast के बाद वो सो जाए। Sleep is very very important, मतलब वो बड़ों के लिए, छोटे के लिए, हर किसी के लिए important, and that's the only time I get for myself, because otherwise I have this that monster toddler running after me. So first nap के बाद he's up, and I don't immediately get him something to eat. I just wait, I just relax, and by the time it's 1 or 1:30, so उस point पे I decide to get him lunch. लंच के बाद भी मैं 2 ढाई घंटे आराम से पास करती हूँ, जब तक वो अपनी टॉयज को, क्योंकि अभी वो उस स्टेज में है जहाँ वो एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ें, जहाँ वो नॉट जस्ट ऑब्जर्विंग बाय आईज, बट ही इज टचिंग देम, ही इज सिटिंग ऑन हिज राइड ऑन, ही इज enjoying his toys, whatever he's doing, he's just running here and there, he's just walking and moving here and there, तो उस वजह से थक जाता है। 3:30 or 4, I just put him to sleep again for the second nap of the day. But once he's up around 5 or 5:30, उसके बाद I don't let him sleep. Even though he's sleepy, he just be cranky or something, but he'll be fine about it eventually, because toddler meltdowns are there, toddler tantrums are there, but that's okay. And finally at 8:15, I gave him dinner, and before that, of course, I give him the afternoon snack or something, and eventually he's bed by 9:30 or 10. अब वो भी प्रॉब्लम है कि बच्चे की किसी दिन नींद जल्दी हो गई, किसी दिन देर से हो गई,
बट अभी बिकॉज सादिस 18 months old, ही स्टिल ऑन 2 naps a day. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपने इनिशियली किस तरीके से फर्स्ट 2 months या फर्स्ट 3 months में कैसे आपने दिन की नींद जो है वो पैटर्न में बनाई. बट मैं फिर आपको बताऊंगी, बच्चे को थकने दे. बच्चे को एकदम से आप दूध पिलाने के बाद टक 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 सुलाने की कोशिश ना करें. बच्चा अपना टाइम लेगा, ये इतना आसान नहीं है. इट्स अ रोलर कोस्टर जर्नी, but eventually this everything just settles down. You just learn from putting up the diaper to giving the baby a shower, to putting him to sleep. Everything just makes sense eventually. So things will take time. So I just thought to quickly share this with you. Or one more thing before I just conclude. Whenever you're out, make sure that you're not out during the baby nap. या उस दौरान आप ट्रैफिक में रहें या ट्रैवल में रहें, because once the baby sleep gets disturbed, it's really difficult for mother at the end of the day. Suppose I was out somewhere today and I got badly stuck in the traffic, which means that my baby's sleeping hours got hampered, and he didn't sleep when he is supposed to. और वो उस वक्त सोया, यानी जब मैं उसको बाकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करी, वो उस वक्त सो गया. तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज देन आई हैव टू पुश अवे द स्नैक टाइम, द book time, although he doesn't really just, you know, observes the colors of the pictures on the books, or maybe he just plays with some toys. तो मेरे को बाकी चीज़ों को पुश ऑन करना पड़ा. 7 बजे जो वो कर रहा होता था, 7 बजे वो सो रहा था. 7:30 जो वो कर रहा होता है, या मे बी साइकिल, मे बी कार, मे बी जस्ट रनिंग अराउंड मी, मे बी जस्ट गेटिंग द थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उस टाइम वो सो रहा था. तो उस वजह से मेरे बाकी सारे काम पोस्टपोन हो जाते हैं. So don't fiddle with the child's sleeping pattern. एक बार बन गया, please stick to that. Even if you have a guest to attend, even if you have a party to attend, even if you have this, make sure that you stick to your baby's schedule, because that will lead you to a serious mess that you will, eventually you'll just bombard. And suppose you have two people to attend, you have guests to attend, but make sure that if it's your child's sleeping time, let that baby first, let the attend the baby first. That's your priority. Make sure that he or she जो उसका टाइम टेबल है उस हिसाब से वो अपना रेस्ट करे. उसके बाद आप कोई बाकी चीज़ करें. Don't fiddle with it. अब eventually when my son will go into by 20 months, I think he will just start skipping his morning sleep, and that's okay, because one nap a day is totally okay till the child is in school. उसके बाद it's just okay. So this was it. I try to be very quick. I try to be very spontaneous. I hope कुछ help हो जाए new moms को. I hope कुछ help हो जाए उन लोगों को, those who are struggling with putting their monster toddlers, or really active toddlers to sleep. So that's it from my side this time. I hope this video was informative at least. Thank you so much for watching. Make sure that you share it with your friends and family. I'll see you next time. Take care. Bye bye.